So welcome to the video. In this video we will discuss about the first experiment of organic chemistry of MSc 4th semester. So basically object of this experiment is to prepare benzoic acid from a benzoin. यहाँ पे benzoin के हेल्प से हमें benzoic acid का formation करना है. Then chemical required in this experiment are benzoin and concentrated HNO3. This is a two steps are involved in the preparation of a benzoic acid from benzoin. The first step is preparation of benzyl from benzoin. Now we will see the procedure of preparation of benzyl from benzoin. Took 5 gram of benzoin and 20 ml of concentrate HNO3 in a round bottom flask. Then placed the flask on a boiling water bath and heating for about 1 to 2 hours with a frequent shaking until the fumes of nitrogen oxides ceased to evolve. Then the reaction mixture was then poured into a about 75 ml of cold water taken in a beaker with constant stirring, where benzene separated out as a yellow oil. Then the oil immediately solidified and was filtered, washed and with water and then dried. So basically this was the reaction. C6H5 CHO HCO C6H5 कंसेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है देन C6H5 COCO एंड C6H5 प्लस H2O जो कि हमारी ये बेंजील है. Then we will see the calculation. Molecular weight of a benzoin is 212 gram per mole and molecular weight of a benzyl is 210 gram per mole. Since 212 gram of benzoin is equal to 210 gram of benzyl, then 1 gram of benzoin is equal to, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 212 ग्राम ऑफ बेंजील. हेंस 5 ग्राम ऑफ बेंजोइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 210 अपॉन 212 जो कि हमारी वैल्यू यहाँ पे 4.35 ग्राम ऑफ बेंजील आएगी. देन द परसेंटेज यील्ड विल बी एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड. सो परसेंटेज यील्ड ऑफ बेंजील विल बी 4.37 और 4.95 इंटू 100. तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड हमारा बेंजील का आता है 88.28%. नाउ वी विल गो थ्रू विद इट्स ऑब्जर्वेशन. Then weight of watch glass was 16.84 gram and weight of watch glass plus benzene is equal to 21.21 gram. Then here we can see clearly that what is the benzene crystals weight. So weight of benzene crystals will be basically 4.37. यहाँ पे हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बेंजील क्रिस्टल का वेट आ जाएगा. Then obtained benzene was recrystallized using रेक्टिफाइड स्पिरिट. यहाँ पे रेक्टिफाइड स्पिरिट की हेल्प से हम उसको रिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं. देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ बेंजील इज 90 डिग्री सेल्सियस जो कि ऑब्जर्व्ड है एंड 95 डिग्री सेल्सियस जो कि रिपोर्टेड है. देन वी विल सी द स्टेप 2 ऑफ दिस प्रोसीजर एंड इन द सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन ऑफ बेंजीलिक एसिड फ्रॉम बेंजील टेक प्लेस. In this second step, chemicals required are benzene, KOH, concentrate HCl and ethanol. Now we will go through with its procedure. So basically dissolve 3 gram of benzene in 10 ml of ethanol. Then prepare 10% KOH solution and add it to the benzene solution. Heat the mixture under reflux for 1 hour and cool the reaction mixture and acidify with dilute HCl until benzoic acid precipitates. Then filter the solid wash with cold water and dry. Now we will see the calculation of this second step. So molecular weight of benzene is 210 gram per mole and molecular weight of benzoic is 228 gram per mole. Then we will do here the calculations like previous first step. The 210 gram of benzene is equal to 228 gram of benzoic acid. Then 1 gram of benzene will be 228 upon 210.
तो 3 ग्राम के लिए हमें यदि कैलकुलेट करना है 3 × 228/110 ग्राम ऑफ बेंजिलिक एसिड, जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 3.2571 ग्राम ऑफ बेंजिलिक एसिड आता है. Then here we will calculate the percentage yield of a benzylic acid, and that will be 1.5650 upon 3.2571 into 100. तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज yield 48.05% आता है. Now we will see the observation. The weight of watch glass was same like previous one, 18.45 gram. Weight of watch glass plus benzylic acid was 20.015 gram. So here we can calculate the benzylic acid weight, that will be 1.565 gram, and the melting point of benzylic acid was 144 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा ऑब्जर्व्ड है, और रिपोर्टेड जो है वो हमारा 150 डिग्री सेल्सियस है. Then we will see the result of this experiment. So basically in result we found percentage yield of benzyl will be 88.28% and percentage yield of benzylic acid will be 48.05%. So that's all. Thank you.